Acha, that's good. That you're young now. That's right. That's good. And your immunity is good. So when your immunity is good, no, you're safe. Hello, Prince. कैसे हो? प्रिंस कैसे हैं? बढ़िया। मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ, चल रहा है। तो ये सवाल है, और लोग जब तक आए कोई बात नहीं, आने दीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए तब तक इसको। Strong and vibrant local government ensures active participation of citizens, optimum use of local knowledge and interests, accountability of the representatives. ये एनसीईआरटी से मैंने बनाया है। एनसीईआरटी 11th का, हाँ 11th नहीं 12th का है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, या 11th में शायद। एनीवे बनाए, इसको सॉल्व करें। Hi Arinjay, good morning. The question is before you. Arinjay, this is the question on local government. Solve it. So all agreed on D, and D is correct answer. All options, all statements are right. The next question is this. Make it. Which of the following is correct? Hi Priya. Hi Priya, good morning. The question is before you. This question is in front of you, just solve it. In the context of the Panchayat in India, which one of the following is correct? Panchayat was introduced for first time in colonial India by British government. The uniform model of Panchayati Raj system was introduced by the independent India. The 11th schedule of Indian Constitution contains 3 lists of functional items for the Panchayat, and there is a state election commission to conduct the Panchayat election in every state. मुझे तो सब करेक्ट ही लग रहा है यार, ये तो इसमें, but which one of the following? एक ही करेक्ट होगा इसमें। Yes Prince, ABCD या 50-50 क्या चाहेंगे?
सब सही लग रहा है क्या? पंचायत was introduced for first time in colonial India. ये तो रंग है ना? Actually, it was introduced. It was village was already, you know, locus of administration in India. This ancient time में था. Uniform model of Panchayati Raj was introduced by the independent India. What is right? So yes, 73rd amendment हुआ तो हमारा country independent था, right? तो हम कह सकते हैं कि yes, it is right. But 11th schedule contains 3 lists. ऐसा कोई लिस्ट नहीं है 11th schedule में. 11th schedule में एक ही लिस्ट है जिसमें 29 सब्जेक्ट्स है. ये रॉन्ग हो गया. There is a state election commission to conduct the panchayat election in every state. It is also true, I think, isn't it? Sir, इसमें डी में और बी में कंफ्यूजन थी, तभी अभी तक आंसर नहीं आया था, क्योंकि लग रहा था कि स्टेट इलेक्शन पंचायत के इलेक्शन करवाता होगा. Right. State election ही कम कराता है. Actually, this is also true. But you know, जब मैं ये क्वेश्चन बनाया तो एक्चुअली मैं 73rd अमेंडमेंट और इंडिपेंडेंट इंडिया में 1950 ये दो कॉन्टेक्स्ट थे मेरे. तो ये मेरे हिसाब से ये सही थे और ये गलत थे, लेकिन दोनों सही है. बी और डी दोनों सही है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है पंचायत का इलेक्शन. पंचायत का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, राइट? जब आपको मैंने बताया कि the governor is empowered to appoint state election commission to conduct a state election commission, you know, panchayat election. So both are true. जो भी आप बोलेंगे. अरिंजय, क्लियर? जिसने भी आंसर दिया बी सही है, डी अगर देंगे तो भी सही है. मुझे बनाने में इश्यू हुई. चलिए यहाँ पर देखिए. In the context of the local self-government in India, consider the following statement. The present form of Panchayati Raj system has been implemented in the post-independent India. The 74th Constitutional Amendment Act has strengthened the Panchayati Raj system. There are only 3 kinds of urban local government in India. बहुत आसान सा सवाल है ये. Yes, make it. Yes, second is not correct, Deepak, actually. It was 73rd. For the Panchayati Raj. 74th was urban local body. And there are 8 kinds of urban local body. मैंने urban local government नहीं पढ़ाया आपको. There are 8 kinds of urban local government, right? Yes. So answer is A. Only the first statement is correct. अरिंजय ने आंसर दिया था ना. यस, अरिंजय. अब ये बनाए. ये 73rd अमेंडमेंट से है.
इसमें आई होप गलती नहीं होना चाहिए किसी का भी। Yes, Prince and Priya. Yes. So statement 1 and statement 2 is correct. This it deals with panchayats. Now it's about Gram Sabha. Make it. This question is from 6th standard or 7th standard NCERT. Sixth standard NCERT. सेक्रेटरी के बारे में बताया था मैं आप लोगों को, राइट? कल या परसों जब ग्राम सभा की बात हुई थी, तो सेक्रेटरी एक गवर्नमेंट रिक्रूटेड ऑफिसर होता है ग्राम लेवल पे, जिसका काम होता है मीटिंग को बुलाना, राइट? सेक्रेटरी का काम होता है मीटिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये भी सही है, जो ऑप्शंस 2 है वो भी सही है, एंड ऑप्शंस 1 एंड 2 3 तो सही है, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। तो पंचायत होल्ड्स अकाउंटेबिलिटी, ग्राम सभा होल्ड्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड पंचायत. The secretary is responsible for the calling of the meeting of the ग्राम सभा. ये इलेक्टेड नहीं होता है, ये स्टेट सर्वेंट होता है. पंच का नहीं बताया था आपने जी? परसों सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ सरपंच का नहीं बताया था कि वो मीटिंग बुलाता है. हाँ, नहीं सरपंच बुलाता है, लेकिन ऑर्डर वही देता है, लेकिन ये जो है सेक्रेटरी वो मीटिंग बुला सकता है, यानी सबको इन्फॉर्म करता है. सरपंच बोलेगा इसको, सेक्रेटरी सबको बोलेगा. मैंने सेक्रेटरी और ग्राम सेवक के बारे में आप लोग को बोला था. परसों की बात हुई थी जब हम ग्राम सभा, ग्राम सेवक, सेक्रेटरी की बात हुई थी. एनीवे, खत्म हो गया, 5 ही क्वेश्चन थे. चलिए अब रोल ऑफ पंचायत, ऑफ वुमेन इन पंचायत करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या रोल है वुमेन का. बेसिकली 73rd अमेंडमेंट ने क्या किया, 33%, 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखा, राइट? एंड फॉर द पंचायत राज एक्ट 50% seats would be represented by women. The 50% seats would be reserved for
woman. Is voice breaking? Arinjay, Deepak, Prince, Priya? अच्छा, ब्रेक नहीं कर रहे। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में पहली बार 50% वुमेन रिजर्वेशन दिया गया और उसके बेसिस पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, उत्तराखंड, कितने स्टेट में है अभी तक? has given 50% reservation for 20 states मात्र 33% वुमेन जनरेशन है, रिजर्वेशन है। मैंने कहा अभी 20 स्टेट है जहां पर देयर आर 20 स्टेट्स 50% रिजर्वेशन given to women. Still there are 8 states जहां पर 33% reservation. If participation is in Panchayat, why it is lacking? But due to gendered society. I think we already discussed gendered society, right? The society is very much patriarchal. I don't know, voice is breaking. Should I then? सर आप 2 minutes का रिपीट कर सकते हो because your voice was breaking, sir. अच्छा, we'll do that. I said it was शुरू से बताता हूँ 23rd and made woman in woman as in the panchayat and 33% seats were reserved women. The Bihar Panchayat Act 2006 made provision for 50% women in the Panchayati Raj, right? And this model was followed by various states like Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Kerala, Uttarakhand. Didn't space participation, right? And if you see the active participation of women in the local panchayat, it is lacking. Why it is lacking? Because of gendered society. What is gendered society? Gendered society क्या होता है? What is gendered society? Your voice was still breaking, sir. I asked, what is gendered society? Okay, sir. Got it. Yeah, gender. It's not only male dominant society. Where the male role is fixed, right? Where the male rules over females, right? So the effective participation of the women in local panchayat is restricted due to gendered, and due to patriarchal society, social structure. And this barrier includes, household work, child rearing, lack of information, and consciousness, lack of political experiences, fear of failure and ridicule, fear of character debasement, and bringing shame to the family. Right. The Kuldeep Mathur wrote a book in 2013, and that book name is Panchayati Raj, simple. Published by Oxford University Press, and the Kuldeep Mathur tells us about many
stories, which I have selected two, three stories about women's success in the Panchayat. So here I have, selected three stories. One is Tara, second is Kamla, and third is Fatima Beg. If you see Tara Devi was as a sarpanch in Samredha Nosera village of Panchayat in the Bikaner district of Rajasthan in February 2010. She dedicated herself in protecting girl child. As a result of the child sex ratio was improved in Samredha. With the recent survey revealed in 1014 female against 9 male. Cases in totality, there is no case of dropouts from schools. Situated, 113 kilometers away from Bikaner, Samredha Nosera is among the 20 village panchayat in the district, included in the Sangam Maitri Mission Sansthan. That is a project, strengthening gender response of panchayat in Rajasthan, initiated by the PRI. Here, my purpose is to say that when woman is elected, their purpose is little different from male, right? So if you see the Tara Devi, where she was elected as a sarpanch, and her priority was different: child sex ratio, infant and maternal mortality rate, child dropout, right? If you see the other woman, one is Kamla Mahto in West Bengal, that again narrated by Kuldeep Mathur, and he talks about the Kamla Mahto Panchayat in West Bengal, of Purulia district, stand out as one who is commanded for digging 10 wells for drinking water as well as rigging, initiating employment schemes under integrated rural development program. A similar story is Fatima B. Fatima B is illiterate, a sarpanch who has no education, and she is a village in Andhra Pradesh, caught a national imagination. She got, UNDP award for her work in the panchayat, right? So if you see the women, when they elected in the panchayat, they worked tremendously. But if you see the challenges before the women in the local government, even there are the socio-economic conditions is for women is not favorable. Again, the patriarchal social order, lack of political experiences, information and knowledge, physical violence to women, especially Dalit woman representative, these all are the obstacles before the women participation in local governance. Am I clear? Women and panchayat? अगर इस पे पूछा जाए तो can you write? Right? Can I give you a question? लिखिए, in the context of 73rd Amendment, evaluate the role of women in panchayat. That question. पीटी के लिए मैंने करा है थोड़ा, राइट? ये मेंस के लिए है सारा.
Note it down. Note कर लिया आपने? Done. So if there is a 50% woman representation in women, if you see the the representation of Dalit women, right? There are women who are represented, but Dalit woman faces so many difficulties, right? Because the dominant caste women occupy most of the seats in this prevailing situation, right? And many women allegedly elected as a proxy, proxy. What is that? Women elected as a proxy. Elected as proxy for their husband. आपने प्रधानपति का नाम सुना है? प्रधानपति, प्रधानपति एंड प्रधान पुत्र, क्या होता है ये? यस प्रिया, प्रधान पुत्र. So it is also a kind of means a male dominant society over the woman, means the male will only be the member of the panchayat, sir. Right. Sarpanch pati, yeah, different names are used. So sarpanch इनके महिला होती है, वुमेन होता है, लेकिन पावर एक्सरसाइज करता है उसका हस्बैंड. सरपंच होता है, महिला होती है वुमेन, लेकिन उसका जो पावर एक्सरसाइज करती है वो उनका बेटा करते हैं, सरपंच पुत्र. So women are also elected as a proxy for their husband and other male relatives, right? Many women never attend meeting, and lack of new laws and provisions, and women are usually often ignored in the local government, and these are the challenges still women are facing, right? And what about the Dalit women? There was one meeting that was organized by All India Dalit Mahila Adhikar Manch, right? And it was a elected Dalit woman representative from various states, Bihar, UP, Rajasthan. They highlighted that how the upper caste women use discrimination and violence against them, and even when they go to complain to the police and and administration, they don't support them. In this way, we see that there are many challenges before women, and especially Dalit women at the local level of panchayat. The Supreme Court of India upheld the Haryana Panchayati Raj Act 2015. There are Rajasthan Panchayat Raj Act 2015, and it talks about minimum educational qualification, right, for contesting election in the panchayat. So should there be minimum qualification to contest election in the panchayat? Okay, why? I said no. So it should be there according to me, sir, because now we are talking about the ICT technology, or the the ICT technology is there to the grassroots level also. If you don't have that minimum education, so you don't know how to apply that ICT technology and how to use that ICT technology, sir. So we can say, okay, also so only for technology, for only technology? No, sir. The RTI that we have, the citizen charter that we have, how to use that and how to apply for the RTI in the RTI portal, sir. So the various instrument of the government, that is for to know about the public authority. If you don't have that, listen to one. Give me example. Does MLA know how to use ICT, or MP know how to use ICT? Yes, sir. To some extent. I think MP को तो MLA को ये भी नहीं पता होता कि national anthem कितना है, कौन सा है. If you do survey
you know, Yes, sir. sometimes. Yes, sir. There is one MP. I saw an interview, sir, Right. related to the electoral bond. The electoral Mm-hmm. bond that is issued by his party only, and he don't know Okay. about what is electoral bond. Right. So Of course, of course. Of course. So there should be minimum. Should there be minimum educational qualification for panchayat? Yes. आप एक क्वेश्चन है, सवाल जवाब दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर करूंगा। आपने कहा कि आईसीटी यूज करने के लिए, राइट, हमें चाहिए एजुकेशन। दूसरा, वन बाय वन। यस प्रिया। So the various government instrument that is there, the RTI, the citizen charter. Laws and provisions, right? Yes, sir. To know about the. Okay, okay. And third? What is drawback? अगर हम मान लीजिए मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगा देते हैं कैप, तो ड्रॉबैक क्या है? या अच्छा ही अच्छा है केवल? Is it good that we should put a cap? Due to which sometimes we saw the elite minds, due to which when you have that education or when you have that information regarding the technology that is there, or the information regarding any kind of RTA or the citizen charter that is there, so a kind of attitude we saw. So as we saw the problem that is in case of bureaucracy also, during the independence era, so same condition will in grassroots level we can even see. Have you seen that one bureaucrat is beating up the Yes, sir, bridegrooms Tripura mein? In Tripura. Was he following the law? IAS Shailesh Yadav, I think. हाँ, लोगों ने कास्ट में उसको बांध करके बहुत सारा वो कास्ट के ऊपर ही डिबेट बना दिया कि he was from the lower caste, he was beating the upper caste. Yes, that's about it. Right. So was he following the law? So I think the government has come up with the various only 20 people are there for marriage, and it was I think greater than 20. So he was means it has a negative and positive also. He was just obeying what the government has the guideline of the government. But guideline तो ये नहीं कहता है ना कि जाके थप्पड़ मारो. Yes, sir. It comes in a negative, sir. Like exactly. It will come in a negative, sir. Exactly. क्या डिस्क्रिपेंसी थी? अरे अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग बताते हैं दीपक. कोई कहता है कि 11:30 बजे तक उनके पास परमिशन थी, जब वो डीएम कहता है कि 10 बजे तक था. हाँ सर, द डिस्क्रिपेंसी इज दैट वो फॉर्म पे टाइम मेंशन नहीं होता कि कब से कब तक, बस डे मेंशन रहता है कि इस दिन इनको परमिशन है. सर वो टाइम मेंशन नहीं था. सो अगर देखा जाए तो लीगली उन्होंने इन जनरल जो उन्हें परमिशन मिला है उसको वायलेट नहीं किया. लेकिन जो जनरल सर्कुलर था जिसमें मैरिज नहीं, बट इन जनरल जो सर्कुलर है वो ऑब्वियसली वायलेट हुआ है. But people are also of different varied stance and opinions, but I am of the opinion that it could have been handled better. Yeah. So he must have handled without resorting violence. हाँ सर, आप जैसे दीपक ने कहा कि ठीक है उसमें टाइम मेंशन नहीं होता, कुछ भी ओके, सब चीजें ठीक है, लेकिन जब आपको पता है आपके स्टेट में 10 बजे के बाद सब बंद होना है, तो आपने भी शादी कंटिन्यू क्यों करी? मैं ये नहीं कह रहा कि जो यादव जी है उन्होंने सही काम किया कि उनको मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था, वो उनका एक अपना पता नहीं उस टाइम पे सिचुएशन कैसी रही हो, उन्होंने क्या फेस किया हो, इवन उसके बाद भी लेकिन उनको हाथ चलाने का हक नहीं. हाँ, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गए थे वहां पे, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए गए थे. तो अगर वो वहां जाके ऐसा करते हैं तो आई थिंक सो सर उनको सस्पेंड कर दिया गया है ना. I don't know, बहुत लोगों ने मैंने देखी है सर, उसमें सस्पेंड कर दिया है.
इवन मेरा यहाँ पे था कि क्या उन्होंने भी लॉ फॉलो नहीं किया। तो प्रिया आप जो बोल रही कि ओके लॉ एंड प्रोविजंस जानने के लिए पढ़ाई जरूरी होती है, आईसीटी के लिए जरूरी होती है। एनीवे पहले सबसे पूछ लेते हैं ये सवाल। प्रिंस आप बताइए कि क्या मिनिमल क्वालिफिकेशन होना चाहिए पंचायत इलेक्शन के लिए या नहीं? हाँ तो क्यों? सर पंचायत इलेक्शन के लिए आई थिंक सो मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन करे भी तो आई थिंक +2 तक मतलब ठीक रहेगा, क्योंकि वहां पे उनको ना सर लोकल जो उनके इश्यूज है ना उनके साथ ज्यादा उन चीजों को फेस करना पड़ता है बकायदा कि बाहर क्या हो रहा है वो लोकल। क्योंकि आप देखो पंचायत तो लोकल गवर्नमेंट है ना, तो वो अपने अंदर देखेगी, तो उसके लिए फिर उनको यही चीजें होती है कि आपके मतलब इनर मतलब गांवों में क्या सिचुएशन है, कोई लड़की को लेके कोई जैसे वो होता है, क्या कहते हैं, आज वो एक नारा चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कई कई गांवों में होता है वो पढ़ाते नहीं है, वो उनकी एक मतलब सर्टेन एज आने पे 12-13 साल होने पे शादी कर देते हैं, आज भी होता है। अगर हम इससे चौंका है कि नहीं होता तो हम गलत है, आज भी होता है, बहुत होता है। हाँ। मैं बता रहा हूँ 2013 की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि 60% से ऊपर जो मैरिज होता है इंडिया में इट्स बिफोर एज ऑफ पॉवर्टी। 60%। आई डोंट नो द करेंट स्टेटस, राइट? सो मैरिज तो होते हैं, करंट स्टेटस में थोड़ा कम होगा बट है ऑफ कोर्स है अभी भी है। तो इनको मतलब एक मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको लोकल इश्यूज के साथ डील करना पड़ता है। तो अगर ये ज्यादा लिटरेट नहीं भी होंगे तो काम चलेगा, लेकिन इनको लोकल इश्यूज अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, तो तभी क्या जाके ये जो भी इलेक्टोरेट मतलब इलेक्शन लड़ते हैं उनको तो लोकल इश्यू पता होता है, उनको नहीं पीआर, सर, उनका पीआर मैं ऐसा भी नहीं मानता, मैं ऐसा भी नहीं मानता कि जो पंचायत लेवल पे, आई एम टॉकिंग अबाउट पंचायत लेवल पे, नॉट एमपी एमएलए। ना एमपी एमएलए तो तक सर उनको तो ग्रेजुएट होना चाहिए, उनको तो एथिक्स पता होनी चाहिए, उनको तो रूल एंड रेगुलेशन पता होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे तो आई थिंक जैसे आपने सही कहा उनको नेशनल एंथम भी नहीं पता, राइट? तो उसका तो बहुत दूर का बात है। ठीक है दीपक आप बताएं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन? So at the very grassroots level where we are talking about the local government, local self-government, there shouldn't be any minimum educational qualification. There are two reasons behind it. The first one is that our social and the social structure is such that the women can be kept from knowledge, means उनको स्कूल ही नहीं जाने दिया जाएगा, but तो तब उस हिसाब से वो कभी वो वाला बैरियर पार ही नहीं कर पाएंगे, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सेकंड क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, सो देयर इज अ फिनोमेना दैट यू कैन बी मींस द सोशल स्ट्रक्चर कैन मेक यू इम्पर्वियस टू नॉलेज बट नॉट इंफॉर्मेशन। हो सकता है आपको एजुकेशन ना मिले, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल कि आपको आपके पास इंफॉर्मेशन ना आए। एंड इन ऑर्डर टू रूल or sorry, in order to manage the affairs in the local government, what you need the most basic is the information of those areas and the development of this whole emotional intelligence and how to deal with certain situations जो आपको experience के साथ आ जाता है by dealing with the people, personal relationship, which education हमने देखा है कि education this is not necessarily provided by education, because we have seen people जिनके पास बहुत बड़ी qualifications है लेकिन लोगों के साथ कैसे डील करना है वो नहीं पता। So minimum educational qualification उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए। When you go up the pedestal, आप higher level में जाते हो तब educational qualification जरूरी हो जाता है, assembly or parliament. Yes sir. Yeah, so that is why I think that minimum educational qualification for the local self-government shouldn't be there. Okay. Arinjay? I believe that bare minimum functional knowledge is necessary for anyone who is going to be contesting for. Yes side. Okay. You are yes side. Okay. Because rural areas, sir, we know that even though it has diminished quite a lot, but still certain fragments of the caste system still prevail in those areas.
and the social structure is dictated by those norms, those archaic yet existing norms. But one of the most important aspects of the caste system was that it denied education or access to knowledge for those who belong to a lower strata of society. Okay, yani Dalit. Yes, Dalits and the depressed classes. Even women had kept outside of the and which is why those who had access to knowledge, they had access to information and how to analyze that information. And they were able to, because of that power to analyze information and to use it for their benefit, they were able to easily overpower and overwhelm these people and were able to exploit them as they wished, because they had that power because of the knowledge that they had gained. So by on that basis, to set the norm at on such a basis, to set the minimum criteria at graduate level, that would be a bit disadvantageous to these people, especially Dalits and women. Because so are you talking, or are you supporting the, or are you opposing this? I'm supporting it, but only to a certain level. Not I'm not expecting that they should set the minimum criteria at becoming a graduate, but at least plus to knowledge, that is, the functional knowledge, or at least matriculation. Till matriculation, they'll have some functional knowledge on how to analyze the information that they have at their disposal. They'll have access to information. They'll have enough experience. So not graduate, but 10th to hona chahiye kam se kam, right? Yeah, 10th to hona chahiye, sir. Because there is a hope, because till now the stats show that I don't know, 2011 census showed 65% women. Till now it must reach around, I don't know, 70% women who must be literate. So it is still a lot of ambiguity in the whole process, but till matriculation level we can achieve those targets, and we can have that, we can have more inclusion of women in those roles. They can be more participative. And this core level of education will enhance their participatory role, and will give them those assets through which they can play a more dominant role in this whole process. I think you are saying that education is desirable, but it's not a sufficient condition. It's desirable कि 10th होना चाहिए, ऐसा नहीं कि graduate होना चाहिए. कम से कम थोड़ा minimal education होना चाहिए. That's fine. But you're saying 10th should be mandatory, right? Yes, sir. Till matriculation should be mandatory. They should be able to know how to read, write, and understand, analyze information that is written. Yes, Prince. सर मैं ना एक चीज और बोलना चाहूंगा इसमें. बोलिए. हम सर इधर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. सर हम जब स्कूल जाते थे तो उसमें ना हमें ना एजुकेशन के साथ साथ काफी सारी चीजें सिखाई जाती थी कि यूनिटी कैसे रखनी है. अगर आप किसी के साथ मिलके काम करोगे तो वो काम ज्यादा आसानी से होगा, अकेले करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा. लोगों के साथ कैसे बन के चलना है अपने, और जो हमारा एक डेली में जो हमको एक, मैं कह सकता हूँ, हमारे जो मेन मोरल्स हैं उनको डिफाइन किया जाता था अच्छे से. कैसे पंक्चुअल रहना है टाइम के लिए, किसी भी चीज के लिए. तो ये सब चीजें भी सर एक लीडर के अंदर तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए. अगर कोई एक लीडर है तो आपको लगता है कि लीडर के पास पंक्चुअलिटी नहीं होती है? मुझे लगता है लीडर बहुत काम करते हैं, ओवर प्रेशर रहते हैं वो हमेशा. सर बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर रहता है, बस वो यही देखते हैं कि कहाँ से आएगा. नहीं, काम भी बहुत करते हैं. देखिए काम भी बहुत करते हैं. आप कभी 6 महीना रहिए उनके साथ, फिर पता चलेगा. बहुत आता भी है, बहुत जाता भी है. कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स उनका मैनेजमेंट रहता है कि ऑफ कोर्स कहाँ से किधर से कौन सा छाप लो. हाँ, बट वो काम भी बहुत करते हैं. राइट, यू कैन डिनाई. हाँ बोलिए. जो सर मतलब जैसे अगर एजुकेशन की कमी है तो मतलब नॉर्मल सी चीजें, ना वो कभी स्कूल गए ना वो कभी कॉलेज गए. See, there are two kinds of education. Education means you are patterned educated. That means you are enrolled in education. मतलब स्कूल में enrollment मिला, कॉलेज में आपने 10वीं पास किया, 7th 8th
10th पास किया, फिर 12 पास किया। एक एजुकेशन होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। आपने एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के साथ ही, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ही एक्सपीरियंस आती है। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, राइट? फिर भी प्रैक्टिकल नॉलेज है तभी तो पीआर अच्छा है। कंटेस्ट इलेक्शन कौन करता है? जिसका पीआर, पर्सनल रिलेशन अच्छे होते हैं गांव में। यस सर। जिसको 10-20 लोग जानता रहता है, जो कलेक्टिव वर्क में जाता रहता है, वो इलेक्शन लड़ता है। कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ता। लेट मी टेल यू, इलेक्शन लड़ना सबके बस की बात नहीं है। सर वो चीज ठीक है। वो अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 12 लगता है, पार्षद का इलेक्शन होता है, तो उसमें एक साइड पे बंदा खड़ा हुआ था, उसने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, लेकिन वो फिर भी नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि जो दूसरे वाला बंदा था उसका जो मतलब गुडविल थी और पर्सनल रिलेशन थे ना लोगों के साथ, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हाँ, तो वो पैसा भी कुछ नहीं कर पाया जितना उसके रिलेशंस ने कर दिया, रिलेशनशिप ने कर गया, राइट? हाँ। लेकिन उसके मैटर में मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने तो उस चीज को फेस किया है। वो ना मतलब उन्होंने +2 कर रखी है। कहीं कहीं ना जो लीगल मैटर्स आ जाते हैं ना जैसे सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे फिर उनको ना मतलब अपने जो उनके मतलब साथ की जो ग्रुप के, अब लीडर अकेला तो होता नहीं है, ओबेसा वो ग्रुप लेके चलते हैं, तो जो उनके ग्रुप के बंदे हैं तो उनके साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा, कैसे करेंगे और ये सब चीजें, बस। लेकिन एक चीज, हाँ, तब जाके वो अगर उनको थोड़ा सा भी मेन मतलब क्रश पता हो ना, कि ये नहीं कि मैंने ये नहीं कह रहा, कि उनको सिर्फ बेस पता होना चाहिए। अगर बेस पता होगा तो सर वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब कर लेंगे, ठीक है। इफ दे नो बेस, सो दैट्स व्हाई बेसिक थोड़ा बहुत तो उनको लिटरेट होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा बताता हूं मैं। लेट मी टेल यू द implications of this Panchayati Raj Act, the Haryana Panchayati Raj Act 2015 and the Rajasthan Panchayati Raj Act 2015। राजस्थान में भी है ये। क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? Minimum education required for eligibility to contest in a panchayat election, right, is a completion of matriculation in case of general candidate, completion of 8th class for woman candidate and a candidate belonging to scheduled caste, and completion of class 5th pass for a scheduled caste woman candidate contesting for the post of Panch, yani ward member, right? There are other ground of disqualification, you see. So, like failure to pay arrears to any primary agricultural cooperative society or agricultural cooperative banks, inability to pay electricity bills, arrears, and not having toilets, right? And अगर इस criteria को अगर हम implement करते हैं, it's not a big criteria. Having toilet is not a big criteria. You know, we are very fortunate कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारे पास टॉयलेट है, you know, and we have, you know, access to food, access to internet, access to knowledge, access to different, you know, resources. But let me tell you the village scenario. अगर हम 5th क्लास की बात करते हैं या टॉयलेट की भी बात कर लेते हैं, 68% वुमेन ऐसी हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी, 41% जो ऐसी वुमेन है जो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, एंड रफली 45% जो रूरल हाउस होल्ड है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, राइट? अगर एससी की बात करें तो ये फिगर 55% पे जाता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। Let me tell you one more example. This is the explanation. Let me give you one example, a wonderful example. First election was conducted in India when? First general election, November 1951 to February 1952. First general election. Okay. इस समय हमारे पास ये कितना था? लिटरेसी रेट क्या थी? लिटरेसी रेट कितना % था उस टाइम पे? 37%। कहां से आ जाएगा? 15%।
लिटरेसी रेट मीन्स वो लिख सकता है, राइट, पढ़ सकता है। ये नहीं कि 5वीं पास, दूसरी पास भी लिटरेसी है। अगर आजकल तो बच्चे नर्सरी में उनको सब कुछ पढ़ना आता है, राइट, अगर वो दूसरी पास है, लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, तो वो लिटरेट है। तो 15% लिटरेट था। एजुकेटेड कितना परसेंट होगा अप्रोक्सीमेटली 5वीं से ऊपर? अगर हम थोड़ा सा एजम्पशन लगाएं तो, या मान लगते हैं कि 14% था। 1% ऐसे लोग थे मात्र दूसरी पास थे, 14% ऐसे लोग थे जो 5वीं से ऊपर थे। अब मान लीजिए क्राइटेरिया तब लगा दिया जाता तो क्या होता? 86% जो इलेक्टोरेट थे वो कंटेस्ट नहीं कर पाते। कंटेस्ट कौन कर पाता? मात्र 14% लोग। और जो चुन के आते वो मात्र 14% से लोग चुन के आते। क्या हम इसको डेमोक्रेसी कह सकते थे? कैन वी कॉल इट डेमोक्रेसी? यस और नो? प्रिया? But Because sir, we can't compare the contemporary time with this time, sir. Because अगर हम इसे अभी 86% लोग थे जो बाहर थे। अभी अगर हम बात करेंगे तो 68% वुमेन जो एससी वुमेन है जो बाहर हो जाते हैं। टोटल ऑल ओवर जो फिगर है वो 45% जो रूरल हाउस होल्ड है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने से बाहर हो जाते हैं। यानी 50%, 5% लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन यहीं से आ पाएगा। दैट मीन्स कि जो लोकल पंचायत होगा इट वुड बी वेरी एक्सक्लूसिव, यू नो। वी क्रिटिसाइज्ड, तो आप कंपेयर कर रहे, मैं तो कंपेयर कर रहा हूं 1951-52, यू नो, एथेनियन सिटी स्टेट, एथेनियन डेमोक्रेसी। Do you know a little bit about that? In Athenian democracy, Athens is known as mother of democracy, the modern democracy. Not only slaves, वहां पर मात्र 1/3% को वोटिंग राइट था और सारे वो सिटीजन थे। हम कहते हैं कि एथेनियन डेमोक्रेसी वाज एक्सक्लूसिव। So it was slave, it was women, it was foreigners, it was metics, all were out of the, you know, this right to vote. It was very exclusive. हम तो वहां चली, मैंने 1950 के बारे में बताया। Can we call this, you know, this local government as inclusive? हम नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि ये इट इज एक्सक्लूसिव है। And as rightly pointed out by Deepak that, you know, having pattern knowledge, you know, having degree 8वीं पास या 5वीं पास कितना आईसीटी का नॉलेज आपको दे देगा प्रिया, या किसी को दे देगा? 5th पास या 8th पास या इवन 10th पास कितना आईसीटी का नॉलेज दे देगा? You need, you know, a person to convey, you know, technical person. आपको लॉ के मामले में लॉयर चाहिए, टेक्निक्स, यू नो, आईसीटी के मामले में ऐसे इंसान चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है एज ए लोकल लीडर, इफ यू हैव, यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन, राइट? कंटेस्टिंग इलेक्शन शुड नॉट बी, यू नो, banned or prohibited on the sake of education only. I'm telling you, see, education is desirable. It is desirable, but is it not only sufficient condition to foster a great democracy? No, we have seen the educated person becomes most corrupt, right? And unsuitable for democracy. So it's not, you know, illiterate is unsuitable to democracy. No, you know, the person who has not been gone to school can be suitable to democracy. Yes, now come Priya, Prince, Deepak, Arinjay.
Yes, Priya, बताएं. Yes, sir, exceptions are there, but it's little bit skeptical, sir. अगर हम women की बात, if we are talking about कि minimum education होना चाहिए, so there also we saw के the women that are not allowed even for the education. So ऐसे तो women के representation होगा ही नहीं because they are not allowed for education. So minimum education नहीं होगा women के पास, it means कि they are not allowed to represent. Yes, तभी तो मैं इसको अपोज कर रहा हूँ कि this minimal qualification will exclude women, Dalit women from the local government, and it will make a exclusive domain for the dominant caste basically. Yes. Yes, sir. But sir, like the government come up with the various policies for the women, like in case of Bihar, providing incentive to the women after 10th, after 12th, like bicycle, or in case of midday meal program की एक तरह का लालच type we can say कि so that they can send their so in policies को अगर हम the executives or the NGOs that are there, if they implement that policies well, so it is possible कि education is desirable. Education is desirable. All should get education. But woman is not getting education not only for कि वो education नहीं चाहती थी. My mother is never went to school. My mother, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं गई, तो बोलती she was elder, तो 7 भाई बहन थे वो लोग, और my mother was good, excellent in study. Initial her memory says कि मैं अच्छी थी, but मेरे पिताजी ने जाने नहीं दिया. भाई बहन थी, उसको केयर करने में, घर का काम करने में, राइट. सो मान लीजिए फिर मेरी मदर अगर इलेक्शन लड़ना, अगर तो एजुकेशन में थी अच्छी बट नहीं करने दिया, बट वो बाद में जाकर के वो लोगों से इंटरेक्ट करती है, लोगों से बात करती है, कलेक्टिव जब झगड़ा होता तो वहां पे भी जाती है, राइट, वहां पे रिजॉल्व करती है. तो मेरी मदर को इसलिए एक्सक्लूड कर दिया जाए इलेक्शन में लड़ने से क्योंकि शी नेवर बीन टू स्कूल, राइट. सो मैं वो नहीं गई स्कूल या कोई नहीं गया, मान लीजिए ABCDEFG जो भी है वो नहीं गया, इसका कारण वही उसी को माना जाता है कि वो नहीं गया इसलिए उसको मना करो. वो नहीं गया, उसके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे, and that's why they ABCD whatever never been to school, right. But at the certain point of time they developed personal relationship, goodwill of the people, and they want to contest election. I'm talking about Panchayat. Even Panchayat पे वो ऐसा नहीं कि लोगों के पास 25 लाख रुपए खर्च करने के लिए होते पंचायत इलेक्शन पर, नहीं होते. जैसे MLA, अभी इलेक्शन कमीशन हम पढ़ेंगे, देखेंगे MLA कितना खर्च करता है, MP कितना खर्च करता है. Yes, Priya. But sir, I think goodwill is not enough for the development of the panchayat, sir. You should have that knowledge, sir. Even it is not necessary कि by education only, it can be a practical knowledge also. Practical knowledge, yes. आप क्या लगता है कि those person who contest election doesn't have practical knowledge? The Fatima B, I have given you example. In Andhra Pradesh, there is a one called naam hai Islampur. Right. If you see the ministry, the Panchayati Raj ministry website, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं. एंड आपको पता है कि जहां पर वुमेन कंटेस्ट करती है, इलेक्ट होती है, देयर आर मेनी मॉडल पंचायत जहां पर खुली पाइप्ड वाटर है, वहां पर कोई भी वो ओपन डेफिकेशन नहीं है, जहां पर बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो करा लिए गए. एंड वुमेन हैज लॉट्स ऑफ रोल. इन छत्तीसगढ़ देयर आर एग्जांपल, इब्राहिमपुर, right. So I think women minimal qualification is okay, it's desirable, but it is not necessary condition to foster a local democracy in a good way.
it is a desirable condition. Everyone should get education. I'm not denying the fact. Right? Education is a value which enhances the capacity and capability of the individual, as Amrita Sen has also pointed out. But it should not be the mandatory qualification to contest the election. Yes, Deepak. So I stand by the points which I made earlier, but I think there is some validity to what Priya Chiswal is also talking about. So say for this, there are two instances where a man has contested in the election and a woman has contested in the election. Right. Due to the social and the patriarchal nature, a woman is not educated, but the man is. Now, keeping in mind, the man is very much educated and he can avail all the services which are provided by the government because of the skills he can employ, such as look over the internet, making use of the ICT services much efficiently and effectively. अब सर वो जो डेवलपमेंट लेकर आएंगे अपने एरिया में और जो वुमेन लेके आएगी, सर देयर विल बी अ कंसिडरेबल डिफरेंस. बट अगेन सर उसके बाद लोग ये नहीं देखेंगे कि वुमेन एक्चुअली एजुकेटेड नहीं है इसलिए ऐसा लेके आई है. आवर सोसाइटी इज सच कि वो देखेगी कि वुमेन पावर में आई है इसीलिए ऐसा हाल हो रहा है. लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर एक एजुकेटेड वुमेन को हम लोग लगा दें, सो ये जो गैप है ये कम हो सकता है सर. And then the mindset won't be created कि women है इसीलिए वो है. मैं नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन अगर सबको मिले उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगा दिया ये ठीक है. We have not achieved 100% literacy rate yet. Right? So if अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं लागू होता है तो democracy would be a good, I think, local democracy. It would be inclusive and participatory. Otherwise, it would be exclusive. Yes, Priya. Again, now the same question. Now tell me yes or no. Yes, sir. Yes. But if we have to write an answer on it, so it's the middle path should be there. Like the positives we can write or the negatives we can write. Exactly. You can do the yes. Ki education is desirable, but it's not sufficient condition. Example given by Deepak, right? कि अगर man होगा और woman होगा, man educated है, woman educated नहीं है, लेकिन उनका जो development path होगा दोनों का वो अलग अलग होगा, right? But credit अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे. And I'm telling you, academia में तो पूरा का पूरा ये है, क्या नाम है, consensus है कि minimum education पंचायत लेवल पे, इट्स नॉट दैट सुप्रीम कोर्ट जो हमेशा करती है वो सही करती है या असेंबली जो हमेशा करता है वो सही करता है. नो, सो यस, यू हैव टू बैलेंस. एजुकेशन इज डिजायरेबल बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन. आपको नेगेटिव पॉइंट भी बताना पड़ेगा कि अगर हम फिर ये कंडीशन रखते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा. ये जो अभी बताया मैंने कि टोटल 68% वुमेन जो एससी वुमेन है वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, 41% एससी मैन इनएलिजिबल हो जाएगा पंचायत इलेक्शन से, टोटली रफली 45% जो रूरल हाउस होल्ड है वो अलग हो जाएंगे, राइट. एससी मैन की अगर बात करेंगे तो 55% जो है वो अलग हो जाएंगे. तो ये डेमोक्रेसी जो होगा वो पूरा एक्सक्लूसिव हो जाएगा. बट अगर एजुकेशन होता है तो क्या क्या एडवांटेज, ऑफ कोर्स there are advantages of education. There is no denying of the fact. Fine. Now come to see the caste and panchayat in India. Yes, Deepak, do you want to say anything? सर अगर हम ऐसा नेगेटिव लिख के लाइक इतना 60 समथिंग पॉपुलेशन व्हिच विल एक्सक्लूड इफ देयर इज अ मिनिमम एजुकेशन, और उसके बाद हम ये पॉजिटिव लिखते हैं बट एजुकेशन इज नेसेसरी. ऐसा करना है कि आपको एक बीच में ये लगाना है एडवांटेजेस, इधर डिसएडवांटेजेस देना है. दोनों तरफ आपको एनालाइज कर देना. 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3 and then conclusion लिख देना है नीचे.
Sir, there is. And in conclusion, में आपको education की बात positive बताना है. Yes. Sir, actually, we already have an example which came just 2 or 3 days back of a Madras High Court judge, Justice Venkatesh. He said that he did not have proper knowledge about this LGBTQIA plus project. So for the time being, he would undergo a training with the psychologist to understand better the situation. Okay. So if we apply this similar, if we extrapolate and apply a similar practice in the Panchayati Raj elections, ki minimum education qualifications necessary nahi honi chahiye. Okay, but once you get elected and there are certain issues which comes to your forum and you do not have proper knowledge about it, then there should be an avenue even for the panchas or the leaders elected, so that they can get themselves proper information about the subject matter. Agar वैसा होता है, then it will be an efficient democracy also, and efficient administration also can be ensured without keeping this minimum education qualification bar. Exactly. So अकेला तो होता नहीं ना, जो चाहे वुमेन होगी चाहे मैन होगा, तो आपको कंपेयर कर देना है और कंक्लूजन लिख देना है. We have 20 minutes. Now come to the caste and Panchayati Raj system, right? So caste is really continue to play a crucial factor in the implementation of PRI effectively. Discrimination against Dalit is still prevalent in any part of India, wherever you go, right? Still, Dalits are not allowed to enter in temple, right? And it is a specter that continue to haunt the body politics of India. This is Nicholas Derrick. I'm not taking name. There's no point to take the name here, the scholar's name. The caste is really it is a specter that is, yes, Nicholas Derrick, yeah, the specter that continue to haunt the body politics of independent India. For Ambedkar, caste was graded inequality. Gandhi supported Varna system, right? But on profession, what is that profession? So just a distinction, he supported the Varna system, not the caste system. Yes, so he supported Varna system, right? And what he opposed? Does he oppose anything? He opposed this whole idea of untouchability that has come. Right. So he opposed untouchability, but he supported Varna system, right? But the Gandhi, there's a debate between Gandhi and Ambedkar, right? This Varna system is based on, Varna Sarma Dharma, right? And Chatur Varna Dharma, and that has come out this Dharma Shastra written by Manu. So if the Varna system will continue, untouchability will continue, right? And Ambedkar was talking about caste system as a graded inequality. What is graded inequality? मैं एक example. This is a ladder, right? So our society is a kind of ladder. Brahmins, Kshatri, then Sudra, then Brahmin, Kshatri, Vaisya, Sudra, Ati Sudra. Even within the Sudra, there is a ladder. Right? So within the Sudra, there are, वहां पर भी hierarchy है. वो मुझसे छोटा है, मैं उससे बड़ा हूँ, वो मुझसे छोटा है, मैं उससे बड़ा हूँ. और within community में शादी नहीं होती है. Right? Within दलित में मतलब SC community है, मान लीजिए, within SC में भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता है. इसकी यहाँ पर भी ऊपर और नीचे का भी फर्क है. And that's why it's called graded, right? Ki one is, one take themselves as
inferior, right? And if we see the society, the bottom layer of the society is treated as untouchables or outcast, later known as Dalit. And there are social exclusion, exploitations, injustice that is from century against Dalit community, and that is the Ambedkar who advocated against the Panchayati Raj system in the Constituent Assembly, and he categorized the caste, this Panchayat as a our village system as a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness, and communalism. The Kuldeep Mathur, the same book, has said that, the 75% or more Dalits are landless or near landless in India, right? And if you see the crime against Dalit, have you watched Article 15 movie? आप लोगों ने देखा है क्या? प्रिया, दीपक ने यस बोला, प्रिंस, अरिंजय, सबने देखा है? नो प्रिया, जस्ट वॉच इट. आज मैंने किसी एक को बोला देखने के लिए, आज मैं आप लोगों को बोलता हूँ. हैव यू हर्ड ऑफ मूवी दामुल? नो. ओके, दिस मूवी, ये मूवी जो आया था 1985 में, and this was the first movie of Prakash Jha, national award मिला था. This is Prakash Jha's first movie and national award मिला था. You must watch this movie. Right? So, Dalit faces multiple exploitation. It's not one dimensional, it's a multi-dimensional, right? In rural areas, and basically they are agricultural laborers. Their literacy rate is very low, right? And if you see the crime record, every 18 minutes a crime is being committed on a Dalit. In such a prevailing condition, there is expectation from 73rd Amendment. It will do something better. There are some positive news, right? But still, it is not, desired result. If you see the, protection of Dalit in the Constitution, you will see the Article 14, Article 15.4, 16.4, 17, 46, 330, 333, 334, 335, 338. It is all for protection of SC, right? So you must be knowing the few articles out of it. प्रिया, 14, 15, 16, 17 इतना तो पता होगा, 46, 30. Yes, sir. So, and in response to the atrocities on Dalit, the Parliament passed SC/ST Prevention of Atrocity Act 1989. There is a National Commission for SC and ST, and for emancipation of Dalit in local governance, 73rd Amendment given, reservation to Dalits as per their population, right? And if you see the example, one example, that's a beautiful example given by that book, and there are Panchayati Raj की जो website पे बहुत सारे example हैं. एक है दल्लू राम भेल का, and he is a Sarpanch of Mogna village of Chittorgarh district of Rajasthan, right? And this Panchayat translated all opportunity into development, right? Panchayat has received overwhelming support in the term of participation and program, right? And this village Panchayat has given a special attention to construction and repair of local infrastructure. It has created footpaths all over the locality for better connectivity. It has constructed bus shelter, gutters, public toilets, irrigation facilities, right? And encouraged school-going children by providing a very conducive atmosphere to the study.
right? It has worked along the Manrega, right? But there are studies on Panchayati Raj that is not giving a good, you have to quote. आपको खुद नहीं कहना है. जब आप कुछ मान लीजिए ऐसा कह रहे हैं negative, don't take on your own. You just quote if you know that. For example, मध्य प्रदेश की स्टडी है 1996 का, राइट? और जॉर्ज मैथ्यू और नायक ने स्टडी किया है. उन्होंने कहा कि अभी भी जो विलेज लेवल है ना, जो पावर स्ट्रक्चर है विलेज का, वो बड़ा ही ऑपरेशन है, राइट? जैसे there are all kinds of exploitation, revenge of mighty, suffering of girls, sexual exploitation of women before and after marriage. It's about Dalit, right? Unquestioned authority of upper caste. It all happens. The M.K. Lele, he studied Maharashtra, right? And he said that, the caste system is still alienate Dalit community from village panchayat. अब बोलेंगे सर ये नेगेटिव है, आपको लिखना है ये नेगेटिव है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. You have to tell the truth, right? And then you have to come to the little solution. Yes, how we can improve such condition, right? Better condition for the Dalit community. Yes, Priya. Any query? So this is the caste, Dalit and the village panchayat. पहले फिर हमने वुमेन एंड पंचायत किया है. फिर थोड़ा देखते हैं कि सिविल सोसाइटी और एनजीओ का रोल क्या है पंचायती राज में. If you see this role of civil society and NGO that has been, important in enhancing the capacity building of the in the local governance. The civil society group and NGO has taken the capacity building initiative. जैसे आप कह रहे थे कि मान लीजिए कोई अनपढ़ मतलब पढ़ी लिखी नहीं है महिला, वो इलेक्ट हो गई है, तो उस मामले में सिविल सोसाइटी ग्रुप, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, एनजीओ वगैरह आकर के उनको हेल्प करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सब हेल्प करते हैं उनको. इनको बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग. Yes, they are promoter institute, right? And there are like example like Shastra Sahitya Parishad in Kerala, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan in Rajasthan, Action Aid in Odisha. ये सब ग्राम सभा के लोगों के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको एम्पावर करने का काम करते हैं, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कब आया था एग्जिस्टेंस में? 2004 में. नहीं पता होगा आप लोगों को. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आया था 2004 में. पहले जो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज थे वो थे मणिशंकर अय्यर, राइट? एंड ही एम्फसाइज्ड ऑन पंचायती राज, राइट, एंड पेशा, राइट? एंड ही ऑर्गेनाइज्ड सेवरल राउंड टेबल. द 7th राउंड टेबल टुक प्लेस इन, पंचायती राज को हटा दिया ना, और इज देयर पंचायती राज स्टिल एग्जिस्ट? Do we have Panchayati Raj now? Yes, जो तोमर है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में डाल दिया गया. We have to see, देखना पड़ेगा. Anyway, the Manishankar Iyer organized several roundtables promoting governance in India, right? And after that, one national capacity building framework has been prepared, and objective of national capacity building framework was to enable panchayat elected representative to upgrade their knowledge and skills for the better performance in the panchayat, right? And especially they were offering help to SC, ST elected panchayat. So then this, so this
institution is, if it is already there, then there is no need for this minimum education qualification, because then it acts as a barrier. जो भी आपको necessary चीज चाहिए govern करने के लिए efficiently, वो तो ये national building framework दे देगा. Exactly. So there are self-help group, there are community-based, organization. You can use there. अगर question आता है minimal qualification के लिए, you can use there. There are so many, organization, right? Which gives, which works for capacity building for the elector, which help the electors. Ministry of Panchayati constituted an expert committee in 2012, right, to study the Panchayati Raj, and they submitted a report in 2013, right, and they talked about activity mapping. Activity mapping means मान लीजिए 5 पंचायतें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लीजिए 8 है. अब सबको हमें स्टडी करना है, राइट, और फिर देखना है कि अगर एक पंचायत बेटर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या क्या कारण है कि एक पंचायत बेटर कर पा रहा है और जो दूसरा पंचायत है वो बेटर नहीं कर पा रहा है. अगर वो बेटर कर पा रहा है तो यहाँ पर जो लैकिंग कर रहा है उसको हमें सपोर्ट करना है. दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी मैपिंग schemes, and it was initiated by the Minister of Panchayati Raj along with the 8 ministries: rural development and agriculture, water resources, rural drinking water and sanitation, school education and literacy, family health, women and welfare, development, tribal affairs. ये सबके साथ मिल करके एक इनिशिएटिव था किनका, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज का. And there are, state government are also transferring fund, function and functionaries. The fund, function and functionaries yes. So in case of activity mapping, you said कि suppose कि these panchayats were there and the study will be there for that, examining the performance of the panchayat. So who will examine? Ministry of Panchayati Raj personnel. They take up the research scholars. जब पंचायती राज का हुआ था तो मेरा फ्रेंड था, उसमें गया था. जब उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट किया था 2013 में, उसमें मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइज करता है, and they take help of the scholars, especially the postgraduate students from various university, right? In the और उनका लीडर एक ब्यूरोक्रेट को बनाता है, 1-2 प्रोफेसर को बनाता है, and then वो उसके लीडरशिप में वो काम होता है, एक्टिविटी मैपिंग basically, right? And the state government is also providing fund, function and functionaries. Fund and function and functionary. Fund means money. You know how much money goes to the panchayat per year? Anyone? It's 5 crore now, right? No, 5 crore per year. Function means जो भी मतलब 11th शेड्यूल में जो भी functions हैं, 29 subjects, उनको दे दिया जाए, उनको काम करने दिया जाए. It was right. And functionary means they should get help of the this all civil society group, self-help group, or any group that is prepared by the national capacity building framework to work with for better performance at the local level, right? So fund, function and functionaries. Clear? फंड मीन्स पैसा, 5 करोड़ मिलता है. पता है कितना घोटाला होता है? मैं अपने पंचायत की बात बता रहा हूँ, कम से कम 3 करोड़ का घोटाला हो जाता है, 2 करोड़ का काम होता है. yes sir, that's what I'm asking sir, कि 5 करोड़ जो आ रहा है, अगर ये सही में इम्प्लीमेंट हो एक बार में ही, like they are means हर एक पंचायत को 5 करोड़ देते हैं,
अगर एक बार में ही इम्प्लीमेंट हो वो 5 करोड़ तो वो तो लाइक इमेज ही चेंज कर देगा विलेज। बिल्कुल इमेज चेंज कर देगा। अब डिपेंड करता है वहां की लीडरशिप पे। यस सर। अगर मैं अपने अभी मैं जनवरी में गया था एंड आई वाज लुकिंग एट द पंचायत, यू नो माय फ्रेंड इज मुखिया, तो हम लोग बैठते हैं तो बातचीत होती है क्या हुआ नहीं हुआ। पता है बीडीओ से लेके बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेके ग्राम सेवक तक सबका बटा हुआ होता है। एक एक स्कीम पे इनका फंड होता है और एक एक स्कीम पे वो परसेंटेज बटा होता है कि किसको कितना जाएगा, जो रेस्ट बचेगा वो खर्च होगा, नहीं तो पेपर पे काम हो गया, बात खत्म हो गई। पेपर पे काम हो जाता है। एक मूवी थी आंध्र प्रदेश के ऊपर, जो वो कुआं खोदता रहता है, कुआं खोदने का एक रिकॉर्ड रहता है, बट see auditing has been started but my state is not experiencing that. I have not experienced. राजस्थान में ऑडिटिंग शुरू हो गया है कि चलो एक ऑडिटिंग होगी एंड it will done by a civil society group along with the government servant. Sir, but this social auditing is left voluntary, na? Huh? I'm not sure whether it is a compulsory or voluntary. Yes. Yeah, because it is not institutionalized in governance class. I think राजस्थान में है. It depends on state to state. Deepak. Okay, sir. राजस्थान में है. Depends on government to government. So funds, the Ministry of has given lots of, Minister of Panchayat, especially the Manishankar Iyer थे, तो उन्होंने बहुत काम किया था पंचायती राज के ऊपर और सशक्तिकरण के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, that's called Rajiv Gandhi सशक्तिकरण अभियान, right? And in 2018 to 2012 there are many programs, again that's called Rashtriya Gram Awas Yojana, and it will work for strengthening the Panchayati Raj to achieve सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जब हम रेलेवेंस पूछ रहे थे दीपक से तो दीपक ने बताया था, राइट, एंड देयर इज अ मिशन अंत्योदय योजना एक्चुअली, और ये खत्म हो गया, इसको पीपीटी को पढ़ लीजिएगा, डन। और आईसीटी वाला पेज है। यस प्रिया। Yes, sir. So DNRLM scheme for the self-help groups like Deen Dayal Antyodaya Yojana for the National Rural Livelihood Mission. Right. तो ई गवर्नेंस के ऊपर एक पेज है, वो पढ़ लीजिएगा, और चैलेंजेस बिफोर पीआरआई है, इसको पढ़ लीजिएगा। मंडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मंडे को मैं इलेक्शन कमीशन शुरू करूंगा। इसमें थोड़ा मैं उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा आप लोग के साथ, आधा घंटा, उसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन शुरू करूंगा। राइट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? प्रिया, दीपक, प्रिंस, अरिंजय? So social audit is not in every state. I think it's not in every state. It ideally should be normatively, but there should be, Panchayat is a state subject. Yes, sir. So it depends on the state whether it it regulates the Panchayat. 20 states में है। दीपक बोल रहे। एक्चुअली सोशल ऑडिट रिपोर्ट जो अवेलेबल है सिटीजन्स के लिए पॉपअप मेनू में अभी तक सिर्फ 20 स्टेट्स ही दिखाते हैं सर। ओके, उनके पास और बिहार में है, बिहार में है। So I have to recheck it. Okay, even है सोशल ऑडिटिंग भी होती है, तो वहां पर भी वो मैनेज कर लेते हैं। जो लोकल लोग होते हैं ना, जो लोकल मुखिया होते हैं, वो सब लोग मैनेज कर लेते हैं, उनको भी कुछ पैसे दे करके वो पेपर पे भी लिखवा लेते हैं कि सब ठीक है। ओके सर, बात ये है कि स्टाफ भी नहीं है सोशल ऑडिटिंग के लिए। राइट। So anyway, see you on Monday. I'm stopping now.